Hello class 6 students, my name is Kritika. I am your computer digital mentor. Today we are going to learn many interesting chapters of computer. So let's start with our second chapter, that is more on Windows 10 file management. So students, before we start our chapter, we have some lesson objectives about Windows Explorer, using File Explorer, multitasking, advantages and disadvantages of multitasking. Then we have file extension. So students, let's start our chapter. Our first topic is Windows Explorer. File management in Windows can be done using File Explorer, previously known as Windows Explorer or this PC. File Explorer displays the hierarchical list of files, folders and storage device, both fixed and removable, on your computer. It is also list any network drives that have been mapped to as a drive letter on your computer. File Explorer can be used to copy, move, rename and search for files and folders. For example, to copy a file, you can open a folder that contains the desired file to be copied or moved, and then just drag and drop the file to target folder or drive. When files or folder are deleted from hard disk, Windows places them in the recycle bin, where they can be retrieved until the recycle bin is emptied. Files or folder deleted from a removable storage media such as network media and network drive are permanently deleted and are not sent to the recycle bin. Now students, next we have disk cleanup. If you want to remove the numbers of unnecessary files from your hard disk, free up disk space, and to help your computer runs faster, use disk cleanup. It removes the temporary internal and downloaded program files, empties the recycle bin files and other items that are not being used for a long time. Now students, our next topic is using File Explorer. How will you use File Explorer? Let's learn about it. To open File Explorer, in the taskbar, click on the File Explorer icon. Now next we have copying and moving file using Explorer. We can copy, move file in Explorer by two methods. First is drag and drop, and second is using cut, copy and paste option. Now students, let's learn about using drag and drop. How will you use drag and drop? Let's learn about it. Follow the below given steps to use drag and drop. So our first step is open File Explorer. Now second is browse and select the file and folder you want to move or copy. Now step third is drag the item to the destination folder and drop it. The selected item will be moved to the destination. To copy the item will be moved to the destination. To copy the item instead of moving it, press and hold down Control while dragging. Now students, it's time to know an interesting fact. To select more than one consecutive file or folder, click the first file or folder, press and hold Shift key and then click the last file or folder to be copied. To select non-consecutive file or folder, press and hold Control key and then click each of the files or folder to be copied. Now students, our next topic is using cut, copy and paste option. Let's learn about how will you use cut, copy and paste option. Follow the following given steps. So our step 1 is open File Explorer. Next step is select the source file or folder and right click on it. Now third step is from the pop-up menu that appears, select cut or copy option as you want to move, copy the file. Now our step 4 is navigate to the destination folder, device or drive in the left pane of the File Explorer window. Now step 5 is select the destination folder and right click on it. Now our sixth step is from the drop down menu select
paste, the selected file or files will be moved or copied as per your choice. Now students, again it's time to know an interesting fact. Dragging a program to a new location creates a shortcut to that program. To move a program, right click and then drag the program to the new location. You must be logged on as administrator to move a program. Now students, our next topic is multitasking. Multitasking is an operating systems allow a user to perform more than one task at a time. The operating system is able to keep track of where you are in these tasks and you can go from the application program to the other without losing information. For example, during multitasking, tasks such as listening to a CD or browsing the internet can be performed in the background while using the other program in the foreground, such as email client. मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारे काम एक ही सिस्टम पे कर सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर डेटा, जिससे हम अपना डेटा भी नहीं खो सकते। जैसे कि अगर हमें कोई गाना सुनना है या कोई गेम खेलना है और उसके साथ ही हमें किसी क्लाइंट को एक मेल भेजना है, तो ये सारे काम हम एक ही साथ एक ही सिस्टम पे कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग। एडवांटेजेस मल्टीटास्किंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। डेटा कैन बी कॉपीड एंड मूव्ड बिटवीन प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम के बीच में से डेटा कॉपी हो सकता है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी सिंस डजन्स ऑफ प्रोग्राम कैन बी रनिंग एट वंस। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि हमें ज्यादा काम मिलता है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे कर सकते हैं। Any changes or updates are seen immediately. For example, if a new email received, you immediately get a notification. अगर काम करते वक्त कोई भी अपडेट हमारे सिस्टम पे आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी इमीडिएटली मिल जाती है। जैसे अगर हम सिस्टम पे किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और हमारी मेल पे कोई अगर ईमेल आती है तो उसकी भी नोटिफिकेशन हमें उसी के साथ इमीडिएटली हमारे स्क्रीन पे शो हो जाती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग। जैसे मल्टीटास्किंग के बहुत सारे फायदे हैं, उसी के साथ काफी सारे नुकसान भी हैं, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इट रिक्वायर्स मोर सिस्टम रिसोर्सेज। इसके लिए सिस्टम के काफी सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। इफ ऑन अ लैपटॉप और पोर्टेबल डिवाइस कंज्यूम्स मच बैटरी पावर। अगर हम किसी पोर्टेबल डिवाइस यानी लैपटॉप या टैबलेट पे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो इससे हमारे सिस्टम की बैटरी बहुत जल्दी लूज होती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल एक्सटेंशन। अ फाइल एक्सटेंशन और अ फाइल नेम एक्सटेंशन is the letters immediately shown after the last period in file name. For example, a text document or file has an extension .txt. This extension allows the operating system to know what type of file it is and what program to turn when you double click on it. Some examples of file extension include .txt, .mp3, .jpg and pptx, which represent text file, mp3 files, jpeg images files and PowerPoint files. Now students, let's learn about some common files extensions. Below is a list of common file extensions that you may find on your computer. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशंस हैं जो हमें किसी भी सिस्टम पे या हमारे सिस्टम पे देखने को मिल सकती है। So students, our first extension is .mp3. An MP3 file is the most common file format used to store digital audio for use on computers and digital media devices. MP3 एक ऐसा फाइल एक्सटेंशन है जिसमें सिर्फ ऑडियो फाइल्स या सॉन्ग्स स्टोर किए जाते हैं। Now next we have .wav. A wave or waveform audio file format is audio file format used to store audio on PCs. Wave एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर हम अपने ऑडियो स्टोर कर सकते हैं।
Now our next extension is .wma. Windows Media Audio or WMA file is an audio file format developed by Microsoft. WMA यानी Windows Media Audio एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसको Microsoft ने बनाया है. Now students, our next extension is .mp4. That is a video file. इसके अंदर हमारी सारी वीडियो फाइल्स स्टोर होती हैं. Next we have .mpeg. A MPEG is a video file. MPEG में हमारे सारे वीडियो डेटा स्टोर होता है. A MPEG video file. Now next we have .avi. An audio video interleave or AVI file is video and audio file created by Microsoft. AVI एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर वीडियो और ऑडियो फाइल्स स्टोर होती हैं. Now next we have .jpg. A JPEG image file is a common file found on computer and the internet. JPEG एक ऐसा फाइल है जो हर कंप्यूटर या इंटरनेट पे मिल सकती है. Next .jpeg, another extension that corresponded to a JPEG image file. Next we have .psd. A Photoshop document or PSD file is used to store images created by Adobe Photoshop. PSD एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो Photoshop में यूज होता है. Photoshop की सारी फाइल PSD फॉर्मेट में सेव की जा सकती हैं. Now next we have .doc. A Word document or doc file is the extension for Windows documents. Word की सारी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में .doc फॉर्मेट के नाम से सेव होती हैं. Next we have .docx. The docs file format become the standard file extension for a Microsoft Word file from MS Word 2007 onwards. Next we have .pdf. A portable document format or PDF file is the file format that has been created by Adobe system. Next we have .ppt. A PowerPoint slide or presentation has or PPT as file extension. Next we have .xix. A Excel document or XLS was the standard file format for Microsoft Excel files. This was changed to XLSX starting with the Excel 2007 and onwards. XLX. Now students, what we have learned in this chapter, let's have a quick look on some key points. File Explorer can be used to copy, move, rename and search files and folders. फाइल फोल्डर का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल को रीनेम करने या मूव करने या सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं. ड्रैगिंग अ प्रोग्राम टू न्यू लोकेशन क्रिएट अ शॉर्टकट टू दैट प्रोग्राम. अगर हम किसी भी प्रोग्राम को उसकी लोकेटेड जगह से मूव करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है. ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग वेरियस टास्क कैन बी परफॉर्म इन द बैकग्राउंड व्हाइल यूजिंग अदर प्रोग्राम इन द फोरग्राउंड. मल्टीटास्किंग का यूज करते वक्त काफी सारे प्रोग्राम हमारे बैकग्राउंड में चल सकते हैं जबकि हम किसी एक प्रोग्राम का इस्तेमाल अपने फोरग्राउंड में कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड कार्ड्स आर सिंबल्स you can use when you don't know what kind of file you are looking for. वाइल्ड कार्ड एक ऐसा सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हम किस फाइल को सर्च करने जा रहे हैं. A file extension is the letters immediately show after the last period in a file name. हमें किसी भी फाइल के लास्ट में उसका फाइल एक्सटेंशन नेम दिखाई देता है. So students, this is it from this chapter. Soon we are going to learn about many interesting chapters of computer. Till then, revise what we learned today. Thank you.